किधर किधर गया? चलना नहीं है? कैमरा चालू? हाँ चालू है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड रोहित राज एंड यू वाचिंग ज्ञानी अड्डा व्लॉग्स। आज हम जो जा रहे हैं बहुत ही मजेदार प्लेस है। एक्चुअली हमें भी पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, पर है लोगों का सुना हुआ है कि अच्छी जगह है, तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि क्या माहौल है, कैसा है। तो बैठो गाड़ी में, चलते हैं। That's how I feel. I dream all night and day. Could you give us a chance if you mind? Alone and loved. That's how I feel. I dream all night and day. Could you give us a chance if you mind? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance? We'll be so fine. I hope one day, somehow, I always will meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow, I always will meet again. It's time to care. We should just share love one day. That's how you feel. You went so far away. You should give us a chance, please be kind. I need to see you just one last time. You should give us a chance, we'll feel alive. I hope one day, somehow, I always. बड़ा ही मज़ेदार प्लेस है और ये क्लाइमेट भी तगड़ा है, पहाड़ी है, जाना है इससे समझो ना, यहाँ से करीबन 7-8 किलोमीटर चलने का है। फिर चल के इस पहाड़ी के पीछे एक और पहाड़ी है, पहाड़ी को चढ़ के फिर वहाँ पे जाना है। तो आएगा तो मज़ा। एक्साइटेड। Night and day. Could you give us a chance if you mind? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance? We'll be so fine. I hope one day, somehow, I always will meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow, I always will meet again. It's time to care. We should just share love one day. आगे जाने के लिए हमें ये जो एरो से इन्हें फॉलो करना पड़ता है। इधर कोई बोर्ड लगे हुए हैं नहीं, एरो के थ्रू जाते रहना हमें। आगे देखिए यार, ये आप लोग जो भी ट्रैवल करते हैं ऐसी जगहों पे, कचरा मत फेंको, चिप्स वगैरह कुछ भी, पूरा गंदगी फैला देते हैं। ये नहीं होना चाहिए बस। तीन बड़े मंदिर है जहाँ पर हम दर्शन करने जाएंगे। 3 मंदिर है, एक तो माँ हिंगलाज माता जी का, गंगा माँ का और शिव शंकर महादेव जी का मंदिर। ऊपर 3 बहुत बड़े भव्य मंदिर हैं, बहुत ही मजेदार मंदिर उधर। मंदिर है महादेव जी का, हर हर गंगे, बहुत ही फेमस है।
again, stop to care. We should just share love one day. स्पेशली इनके लिए बनाया गया। I don't wanna miss a beat, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. महादेव जी का मंदिर है। नागेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर है। मंदिर तो अच्छा नहीं है, अंदर से देखकर through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. See the horizon, turn us to thousands. इस तरफ है, ये रूट है जो हिंगलाज माता जी मंदिर का है, और ये है हर हर गंगा माता जी का मंदिर। ये इधर से घूम के भी अंदर जाते हैं। Somehow I always will meet again, 'cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow I always will meet again, stop to care. We should just share. ये हिंगलाज माता जी का मंदिर गुफा मंदिर है। ये देखो क्या शानदार जगह है, ये देखो कितना शानदार एकदम। ये गंगा माता का मंदिर। ये जो पानी 24/7 इधर से आता ही रहता है। ये गंगा माता जी का मंदिर, हर हर गंगे।
ये गौ माता का मुंह है, इधर से 24/7 पानी आता ही रहता है। अभी कहाँ से आता है किसी को नहीं पता। Need to see you just one last time. You should give us a chance, we'll feel alive. I hope one day, somehow, always we'll meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow. बरसों साल पहले जब अपने लोग अपनी जो स्टोरीज इंस्टाग्राम फेसबुक स्टोरी जब नहीं आती, तब स्टोरीज कैसे एक दूसरे को बताते थे, ये लव का इजहार कैसे करते थे बताते हैं। रानी लव्स दीपिका संग पंकज, सपाराम संग ममता, ये ऐसे एक दूसरे का इजहार यहाँ हुआ करता था। तो ये स्टोरीज प्लेटफॉर्म है हर जगह। अभी बारिश नहीं है तो पानी थोड़ा यहाँ पे नहीं है, बाकी ऊपर बहुत ज़्यादा है। बाकी जब बारिश होती है तो ये पूरी जगह पानी से भर जाती है और ये नदी की तरह बहता है। नदी मतलब इतनी ज़्यादा पानी रहता है कि यहाँ पे उतरने का मना है, नीचे उतर के नहीं चलते, वहाँ चलने की अलग से। तो लोकेशन तो अच्छी है, बाकी बारिश के टाइम में, बिन बारिश में यहाँ पे ठीक है, बाकी इतना मज़ा नहीं है। तो ये थी लोकेशन। कैसी लगी आपको ये प्लेस? तो पहले हम पूछते हैं कि इनको कैसी लगी ये जगह। नेचर वाइज प्लेस बहुत अच्छी है। जिनको नेचर लवर्स है वो आ सकते हैं कभी भी, कोई भी टाइम। यहाँ पे अभी तक धूप ज़्यादा है, बाकी यहाँ पे कम है। यहाँ पे बहुत छाँव वगैरह तगड़ी है तो वो इतनी धूप नहीं लगती। बाकी नेचर वाइज बहुत अच्छी प्लेस है। जो वाटर लवर है, जिनको पानी झरने वो सब देखने हैं, तो बारिश का मौसम पता करके फिर बाकी ओवरऑल प्लेस बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। वादियाँ, झाड़ियाँ, झरने, सूखे झरने तो सूखे हैं, बाकी देखने वाइज बहुत तगड़ा लगता है। इतनी अच्छी प्लेस है, अच्छी है। ये बीजापुर के पास में हर हर गंगे करके इसके नाम बोलते हैं। अच्छी प्लेस कभी भी। बाकी अपने को क्लाइमेट देख के आना है। क्लाइमेट जिनको नेचर वाइज आना है वो कभी भी आ सकता है। तो ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर कर देना। कुछ भी समझ में आए ना समझ में आए तो रिप्लाई उधर आपको मिल जाएगा। लोकेशन में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी सुंदर जगह। थैंक यू।